Hello students, welcome to MGM. This is English 2. We are going to read now unit 5 and 6, the doctor's ward. In unit 4 we have studied about how operation finished and how he got restored his sense at 11 at the night. In unit 5 now we are going to read about the text. Let us start. When the doctor resumed his seat, the patient asked in a faintest whisper possible, Is that something? Sorry, is there someone crying? The doctor advised, You don't extract yourself. You must not talk. He felt the pulse. It was already agitated by the extortion. The patient asked, Am I going? Hey, don't hide me. Doctor, tell me, am I going? କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲେ ହଲଚଲ ନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛ? ଟଣା ଉଟରା ନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛ? ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ବୋଲେ ଟଣା ଉଟରା ନ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋପାଳ କହୁଛି, Don't hide it for me. Tell me, am I going to last? Like the doctor made a deprecating noise and sat back on his chair. He had never faced such a situation like this. It was hot in his nature to whitewash. आगु तो किछि मिछ कथा कहवाको इंटरेस्टेड नहे किंतु परिस्थिति एबे बाध्य करछि कोन कहबो बोल people attached great value to his word because of that. आ से मिछ कहे नै तेनु लोक मान ताको बहुत मानंती. He stole a look at the other. The patient mentioned a finger to draw him nearer and whispered mane dhire dhire koila, I must know how long I am going to last. I must sign the will. It is all ready. Ask my wife at the dispatch box. You must sign as a witness. Se doctor coach, tu to janichu. Ao mo gute willnama sign kariba अछि. Jao mo Mrs. Pakru se dispatch box रे थिबा फाइल टा नै का सो आउ डॉक्टर तुमे सिटी विटनेस रहइबो. विटनेस बेले साक्षी. इट विल बेले प्रॉपर्टी पेपर्स ऊपर गुटे सिग्नेचर करबा विषय रे से कहूची ये राती 12टा आइचे समय रे. सो डॉक्टर भी कंफ्यूज होची से कोन कहबो उत्तर ये गोपाल को बुझी पारनी काहे गोपाल बारंबार पचारछि कोन मु कंटिन्यू करबी तो माने मु बंचबी तो बोलके नाइ तू मर जीवु एबेका विलनामा सिग्नेचर करबा बोली कहला बोले से तार लाइफ विषय जान दबो. नाइ तू बंचबु ठीक अछि नेक्स्ट मॉर्निंग रे कामटे कले हबनी कि बोली कहबा अछि. सो ये द्वंद्व डिलेमा बोलबे आको ये डिलेमा रे वर्तमान डॉक्टर पड़छि. सो वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर हिम. लेट अस सी व्हाट ही टेल्स. At this situation, doctor is thinking to go away somewhere, not to answer anybody else. But the patient clutched the doctor's wrist, tar hath ko dhar dala with his weak fingers. Aur kochi, Ramo, it is my good fortune that you are here at this moment. तुमे ए मोमेंट रे मो सामना रे अछो मोर बड़ भाग्य. I can trust you your words. I can leave my property unsettled. That will mean endless misery to my wife and children. You know all about Subai and his gang. Let us sign before it is too late. Gopal कहूची डॉक्टर को बोलची लेट हे जिबा पूर्वरु मते से प्रॉपर्टी पेपर साइन करिवा छै काहे कि तो सुबाई आ से गैंग कथा तो जानछु केते दुर्दांत से माने जदि मु ए काम पूर्ण न करी मरि जाए ताहेले मोर फैमिली बर्बाद हे जिवो. राइट तेणु प्लीज कोऑपरेट मी बोले कि गोपाल कहूची. डॉक्टर पुणी कौन कहबो किछि स्टडी करि पार. इन रिप्लाई द डॉक्टर सेड यस प्रेजेंटली हां एबे कर दबा तोर विलनामा विल बी साइंड नाउ. देन
He walked off to his car, sat in the back seat and reflected. He looked at his watch. Midnight. ଦେଖିଲା ଏବେ midnight ହେଇଛି ଏବେ କ'ଣ ଏଇ willନାମା ସାଇନ୍ କରିଦେବା ବୋଲୁଛି. If the will, look students, it is very important. It is ବହୁତ important. ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ. If the will was to be signed, it must be done within the next 2 hours or never. ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଆଉ କେବେ ନାହିଁ. Never. He could not be responsible for a mess there. He knew too well the family affairs and about these wolves, Shubai and his gang. But what could he do? Kon karibo? If he asked him to sign the will, it would virtually mean a death sentence and destroy thousands part of a chance that the patient had of survival. से बंचार चान्स बेसी कमिଯିବ ଯଦି ତାକୁ ଏବେକା କରିଦେବା ବୋଲେ ସେ ଜାଣିଦେବ ନା ଏବେକା willନାମା ଇଏ ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ବୋଲୁଛି ବୋଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲିକି. ସୋ ସେ ସସ୍ପିସିୟସଲି ମରିଯାଇପାରେ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କହିପାରୁନି. ଇଆଡ଼େ willନାମା ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର ନ କରିବ ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇପାରେ. ଏନିୱେ he got down, car ଉପରେ ହୁଲ୍ଲା and went in. ଭିତରକୁ ଗଲା. He resumed his seat. ତା ସିଟ୍ରେ ବସିଲା. The patient was staring ବୋଲେ looking at him. ତା ଆଡ଼େ ଅନଉଛି. appealing ବୋଲେ ସେ କିଛି କହିବ ପରା ବୋଲିକି. The doctor said to himself, doctor ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛି, if my words can save his life, he shall not die, he will be damned. अच्छा. He called Gopal. गोपाल को धीरे डाकिला. Listen, सुनो बोला. This was the first time he was going to do a piece of acting before the patient, stimulate a feeling and conceal his judgment. एटा प्रथम थर से तार सत्य को लुचेकी मिछ कहबाकू जाउची गोपाल को बंचाइबा पाई तार फ्रेंड को. He stopped over the patient and said with deliberated emphasis, don't worry about the will now. एबे तू से will रे सिग्नेचर करिया पाई किछ भय करना. You are going to live. तू बंचबू. Your heart is absolutely sound. तोर हाथ पूरा ठीक अछि. A new glow surfaced बोले spread slowly over. धीरे धीरे तम मधुरे गोटे सकारात्मक भावना आसिला. The patient's face as he heard it. He asked in a tone of relief. आराम से पचाला. Do you say so? तू तो सिमती कहूच ना. If it comes from your lips, एटा जदि तो पाटिरु बाहरची, it must be true. यहाँ निश्चित भाव सत्य होगा. The doctor said, quite right. You are improving in every second. प्रति सेकंड रे तो improve होचो. Sleep in peace now. आराम से सो. Don't extract. यार से turn out रहो ना. You must sleep soundly. आराम से दीर्घ समय पर्यंत टिके सोइबाक पड़ियो. I will see you in the morning. सकाळे मु आसबी तो देखिबी. एबे देखो यूनिट 6 डॉक्टर स्वाट जीवा. एबे on his way home he stopped for a moment at the hospital. घर गला को हॉस्पिटल पाके गाड़ी रखला. called his assistant डाकला. कहला said go to that Lola extension case. बोले Gopal, we have done the operation. Yeah, attend him please. से पचाला why sir? ना, you must expect the collapse any second now. Go there with a tube in hand. Take it in case the struggle is too hard at the end. Hurry up. शीघ्र जा. ट्यूब भी सांगर नहीं जाऊ था. तार पल्सेस सब चेक कर था. को मोमेंट रे से कोलैप्स हो जाई पारे. कोलैप्स बेले ठंडा पड़ जेबो ता देह. ठंडा पड़ जेबा अर्थ कोन जानछो तो डाई मर जेबा. Next morning he was back at Lola extension at 10. Next दिन डॉक्टर 10टा बेल को आसिला. From his car he made a dash for the sick bed. The patient was awake and looked very well. देखिला गोपाल भलो छे. The assistant reported satisfactory pulse. Sir, pulses भल चलची.
The doctor put his tube on his heart. The heart upre रखिरी listen the sound. तार हार्ट बीट किमी चलछि सब डॉक्टर चेक कला. चेक कला पर ये भी कन्फर्म हेगला जे गोपाल ठीक ठाक अछि. तापर धीरे तार वाइफ को डाकला, सिक मैन्स वाइफ बोले गोपाल रो वाइफ डाके कहला, डोंट वरी, डोंट लुक सो अनहैप्पी. एबे अनहैप्पी होनी लेडी, योर हस्बैंड इज ऑल राइट. से ठीक अछि. ही विल लिव टू बी 90. आ 90 वर्ष पर्यंत से बंचिबो. When they were going back to the hospital, एति कोई दिख से बाहर फेरला बेलू हॉस्पिटल को बाटे से असिस्टेंट सिटिंग बिसाइड्स हिम इन द कार पचारछि, इज ही गोइंग टू लिव सर. से कौन सतरे बंचो तो आई विल बेट ऑन इट. डॉक्टर बोल आई विल बेट ऑन इट, मु बेट पकेबी. से ग्यारंटी 90 इयर्स पर्यंत कंटिन्यू हो जिवो. तो पिला माने शेष रे या जना पड़ला जे गोपाल ठीक हे गला. राइट. एबे टोटल चैप्टर डॉक्टर स्वाड रो डॉक्टर रमन विषय आम फर्स्ट यूनिट रे पढ़ले. तार कैरेक्टर, तार चरित्र केमती, हाउ ट्रूथफुल ही वाज, लोक माने केमती ताको विश्वास करथुले. सेकंड एपिसोड रे देखिले गोपाल सिक, ता देह खराब अछि, तार पो सहित तार भेट होला. तापर तार पो रो रिक्वेस्ट अनुसार ये जाय कि गोपाल को ट्रीटमेंट कला. गोपाल रो ऑपरेशन हला. राइट. रात 11टा बेले चेता आइला. यूनिट 4 पंता में आसिले. एबे यूनिट 4 रे ताको चेता आसिला पर यूनिट 5 रे से रिक्वेस्ट कला विलनामा सिग्नेचर करिया पाई. अच्छा सुबाई गैंग आ ताटो मुक्ति पाइबा पाई, काले से मरजिबो कि कोन बोलिया सस्पिशियस ता भीतर क्रिएट हला. डॉक्टर रमन मध्ये गुटे कंफ्यूजन रे पड़ला. कहबे कोन कहबी, एबे रात रे जाय कि विलनामा संतो करबी ना ए मरजी बोली भाबुथबो. आको मु कंफर्म करके मिछ दरकार पड़ले कहि कि यू आर ऑल राइट बोली कहबी बोला कहला. सेटा यूनिट 5 रे सिखले. यूनिट 6 रे हम जानि पारले जे गोपाल पूरा पूरी ठीक ठाक हे गेला. ओके स्टूडेंट्स, एबे तमे टोटल डॉक्टर स्वाड लेसन टी सरला. अच्छा मु ए वीडियो सहित लिंक पठै देबी. यूनिट 2 यूनिट 1 रो गुटे वीडियो करथली, 3 4 रो गुटे वीडियो करथली, 4 5 रो गुटे सब जाक एठी लिंक पठै देबी. टोटल चैप्टर आरंभ रु शेष जाय 3टा वीडियो देखि तमे आराम से जानि पारिबो. मात्र गोटे कथा, जेतेबेले मु कहता होछि सेतेबेले तमे पर्सन, प्लेस, टाइम, इवेंट ए 4टा जिंस ऊपर फोकस करथो. काहे कि तुमको इंग्लिश 2 रो एमसीक्यू 10 मार्क आइबो. तनो ए हिसाब रे तमे ए सब विषय ऊपर ट्रेस दबो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक and subscribe. I will next do another chapter English 2 and 1. Okay, thank you very much. Like and subscribe.